Students, we are going to study about chapter number 1 of geography, that is Earth as a planet. So before starting discussion about Earth, let's take a look of solar system. So solar system is formed by sun, planets, asteroids, comet, meteorites and satellites. Okay, so here you can see sun and the 8 planets. Now the question arises here is why only in Earth life exists, not in the rest of the planets? So the answer is, for the life existence the main important is temperature. अगर टेम्परेचर सूटेबल नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है. So here you can see Mercury and Venus. The maximum surface temperature of Mercury and Venus is more than 400 degrees Celsius. So आप समझ सकते हैं मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस का मतलब है यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है. ओके, एंड if we come after the earth here from Mars to Neptune, so the surface temperature is below 0 degree Celsius. और अगर आप ढंग से देखें so it just start from the minus 60 degree Celsius from the Mars. So now you can imagine the freezing point. यहाँ पे तो survive करना impossible ही है. So सिर्फ अगर देखा जाए as compared to everything, only in earth the surface temperature is 15 degrees Celsius, but in your book you have seen it's written 17 degrees Celsius. It's just nearby the 15 degrees Celsius. So 15 degrees Celsius is required for the life existence. When we are studying about earth, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि what are the factors are very important for the surviving of the species. Okay, so the most important things are land, water and air. अगर ये तीन नहीं होंगे तो लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, which we call lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and by all these biosphere is formed. ठीक है, so biosphere is totally depend upon these three factors. So अगर now we are अगर हम अर्थ की बात करें, so they are the earth having 71% water and 29% of land. So we are going to discuss about the percentage of water on the earth and the percentage of air on the earth now. So here you can see the percentage or distribution of water on the earth. So it is out of your 100%. हालांकि अभी आपको मैंने दिखाया था that is 71% and but here we are just calculate from the 100% of water. So out of 100%, oceans having 97.5%, glacier snow permafrost is a 1.725%, groundwater is a 0.075%, and lakes, swamps and rivers are 0.025%. So here you can imagine कि हम कौन कौन सा पानी यूज़ करते हैं. ओशन पानी, ocean water is not possible to use because it's saline in nature. Glacier snow permafrost use नहीं किया जा सकता because it's solid in state. ग्राउंड वाटर और लेक्स और रिवर ही हम जो है पूरे विश्व में इतना ही अमाउंट ऑफ वाटर यूटिलाइज किया जा सकता है. नाउ कम इनटू द गैसेस. So distribution of gases is in the atmosphere is the form of nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and these rest of the part. इसमें आपका नियॉन, वाटर वेपर, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जेनॉन एंड ओजोन आता है. अगर इसमें से अगर परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो नाइट्रोजन हैविंग 78.09, ऑक्सीजन इज 20.95, आर्गन इज 0.93 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%. ठीक है, एंड दीज आर इंक्लूडेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट जिसे हम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है,
Now इसके बाद come into the land. So land, you know, that is 21% on the earth, which is have a different landforms like Himalayas, valleys, or plateaus, plains, deserted. So इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है. बाकी जो हम इसके बारे में मेन जो पढ़ेंगे, that is we are going to discuss later on. Now again we come to earth. So this is your earth. So if I'm going to ask you what is the shape of the earth, most of you will say sphere in shape, but the fact is earth is the oblate spheroid. Why we call it oblate spheroid, that I'll discuss you later. And it's also known as geoid. Geoid का मतलब होता है earth shaped. So now just have a look. If suppose this is a sphere, and just take it as a cake, and I said that you have to distribute equal among 10 people. So आप इसे equally 5 उसमें distribute करोगे, ठीक है. साइज इक्वल होगा सबका, तभी आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे. इन अ सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट अर्थ, अगर हम डायमीटर की बात करें, सो डायमीटर यू नो, हाफ ऑफ द डायमीटर इज़ नोन एज रेडियस. सो अगर हम डायमीटर की बात करें, सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड योर वेस्ट टू ईस्ट विल बी इक्वल होना चाहिए. But when it's measured, so what we found that from north to south, it is your 12,714 kilometer, and when we measure it from west to east, then it is 12,756 kilometer. So now you can see the differences. It is 12,714 kilometer and it is a 12,756 kilometer. The differences आपको दिख रहा है. Not only that, you can see I have shaded this part and this part. इसे shaded करने के पीछे reason है, these two part is bulging of the earth and earth polar side is flattened. यहाँ पे bulging होने के पीछे reason जो है वो gravity है, और यहाँ पे ये flattened है. Flattened means it's not proper flattened, slightly flattened. Okay, that's why it's called oblate spheroid. I think now it's clear to you. Even not only that, अगर हम space से देखें, so earth is look like a blue ball. Blue ball दिखने के पीछे जो reason है वो है the amount of water available on the earth. Now अब अर्थ के शेप को लेके काफ़ी एविडेंस, मतलब काफ़ी प्रूफ किया गया है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. लाइक some of the people believes that earth isn't flattened in shape and it's having edges, and if suppose anybody reach to the edges, he or she can be fall down. So इसलिए एक टाइम था जब लोग कॉर्नर साइड में एजेस में जाने से डरते थे. उन्हें डर लगता था कि अगर वो एकदम कॉर्नर साइड में आ जाएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे अर्थ से. तो लोगों का बिलीफ ये था कि अर्थ जो है एकदम फ्लैट एंड शेप में है. दिस व्हाट फर्स्ट दे थॉट. नेक्स्ट दे थॉट इज कि अर्थ फ्लैटेंड है एंड अर्थ के चारों तरफ सन एंड मून रोटेट कर रहे हैं. Like for an example, you can see sun at the top and moon at the below. So when it's moved toward, when moon come at the top, then sun come at the bottom. So ये इनका belief था. So after this, Aryabhat was the first man who proven that the earth is in
is in sphere in shape, and it rotates on its axis, and it's revolve around the sun. In his book Aryabhata in 499 century era. So now you can understand कि हमारे जो पूर्वज थे, our ancestor, वो कितने ज्ञानी थे. So after him, Greek philosopher Pythagoras in 6th century, he said the same thing. Now come into the main thing, that is proof that the earth is spherical in shape. So how it's proved? तो उसके लिए there are the 9 examples are given to you so that you can understand how it's proved that the earth is in spherical in shape. So first is you can see water and the ship. Just imagine and take it as a ship. So if you ever visit the coastal area, you can see the sea and ocean over there. So आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ पे नदी के एक किनारे में खड़े होने पर हमारे अपोजिट साइड में लैंड हमें दिखता है, लेकिन ओशन और सी में ऐसा नहीं होता. when you are standing at the coastal area, you are not able to see the land opposite side which is opposite to you. तो वो चीज़ देखना पॉसिबल नहीं होता. सो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है वो आपको दिया हुआ है, डैट इज़ अगर सपोज फ्लैटेंड शेप में हो अर्थ, so आप व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट शेप, you can see the shape in a same size when it's nearby you or when it is far from you. आपको जो शेप है, जो साइज है, वो सेम ही नज़र आएगा. It should be equal. But it's proven that कि अर्थ फ्लैटन नहीं है, it is in sphere in shape, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि जब शेप आपके पास होता है, it just biggest from you. आप उसके सामने एक चींटी के समान होता है. You just look like an ant in front of the sheep. But when it is moved towards sailing, so you can see धीरे 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 उसका साइज छोटा होता रहता है, and at the last it's just vanished. So how it's possible? The possible it is possible just because the earth is spherical in shape. जब तक जहाँ तक आपका साइड जाता है आप देख सकते हो, and after that it just vanish from your sight. Now come to the next example. So it's proved that the earth is a sphere in shape. Now the next is a Bedford level experiment. Bedford level experiment में क्या किया गया था? He just put 3 stakes in an equal distance, wooden stake in an equal distance in the water, and he just tried to see that it's look equal or not. So अगर flatten होगा तो क्या होगा? You will see that कि तीनों आपको equal नज़र आएंगे. But here what he found is that कि ये equal नहीं है. In every side it just find out कि जो middle वाला है वो साइज में बड़ा दिख रहा है. It's not equal. और जो फर्स्ट वाला है वो उससे छोटा दिख रहा है. From this way also and from this way also. And it's proved that the earth isn't spherical in shape. क्योंकि अगर spherical नहीं होगा तो वो equal दिखेगा, और जहाँ ये spherical है तो जो एकदम मिड पॉइंट में जो होगा वो आपको सबसे बड़ा दिखेगा. Okay, so this one is the second proof. Now come into the next proof, that is position of the pole star. So कहा ये जाता है पोल स्टार इज इन नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल से अगर पोल स्टार को देखा जाए तो इट्स ऑलवेज इन अ 90 डिग्री एंगल इट्स फॉर्म्ड. अगर पोल स्टार अगर अर्थ फ्लैटन होता तो इसे किसी भी एंगल से देखा जाए इट ऑलवेज बी 90 डिग्री. ठीक है, और इसके रेज इक्वल ही पड़ते. बट हेयर
what observed कि अगर from north it's moved towards equator, so इसका जो angle हो रहा है that is decreases. So here you can see from the north pole it is 90 degree, and after that it forms 67.5 degree, and then it's 45 degree. So it's proved that the pole star which never moved and it's always been 90 degree from the north pole, the angles will be different when we move towards the equator. So it's proved that earth is not in flattened in shape. Now the next is a satellite picture जो कि जेन बैप्टिसाइड डिलेम्ब्रा ने, जो कि एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने जब फर्स्ट सैटेलाइट से अर्थ को देखा अपने कंप्यूटर, तो ही फाउंड दैट अर्थ इज इन स्पेरिकल इन शेप. इट्स लुक लाइक अ ब्लू कलर बॉल. तो ओके, तो यहाँ से ये प्रूव होता है दैट अर्थ इज अ ऑब्लेट स्फेरॉइड. Now next proven is phases of the moon. आपने मून को देखा होगा, कहीं फुल मून, कभी हाफ मून. सो ये जो फेजेस, डिफरेंट फेजेस हम देखते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ. क्योंकि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, सो इसलिए उसके जो डिफरेंट फेजेस है वो हमें देखने को मिलता है. अब इसमें प्रूफ कैसे हो रहा है, दैट इज इसके शेप को आप देखिए ढंग से. इट जस्ट लाइक ओवल. आपको दिख रहा ओवल नहीं, सॉरी, आप देखोगे तो अगर सपोज अर्थ विल बी रेक्टेंगल, अगर वो फ्लैटन भी होता तो जो मून होता वो हमें या फिर तो ऐसे दिखता, या फिर ऐसे दिखता, या फिर ऐसे दिखता. सो हर जगह से वो रेक्टेंगल शेप में ही नज़र आता अगर अर्थ फ्लैटन होता. फ्लैटन होता तो वी विल सी इट फुल मून ओनली. ठीक है, अगर फ्लैटन नहीं होता, सपोज फ्लैटन नहीं होता, रेक्टेंगल शेप में होता या स्क्वायर शेप में होता, तो हमें मून कभी भी इस तरीके से शेप में नज़र नहीं आता. इस टाइप के शेप का आने का मतलब ही यही है कि जो अर्थ है दैट इज स्फीयर इन शेप. इसलिए जो मून है, मून का जो ये शेप है, दैट यू कैन सी प्रॉपरली, इट्स लुक लाइक अ राउंड. here also just half, but it's a half of the whole moon. Here also you can see, here also you can see. Okay, so in this way it's proved that phases of the moon proven the earth is in sphere in shape. क्योंकि अगर किसी चीज़ का शेडो पड़ता है तो शेडो एज इट इज़ पड़ता है. अगर सपोज वो चीज़ रेक्टेंगल हो तो आपको वो रेक्टेंगल ही आधा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा. बट अर्थ स्पेरिकल है, इसलिए उसके जो शेडोज़ हैं वो उसी तरीके से फॉर्मेशन हुए हैं. अब आइए सर्कुलर हॉरिजन. आप सर्कुलर हॉरिजन से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ हॉरिजन. सो हॉरिजन इज़ अ प्लेस वेयर स्काई एंड अर्थ मीट्स. इट्स अपीयर्स टू मीट. मतलब वो दिखने में लगता है कि जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो वो नहीं मिलते. सो हेयर व्हाट वी ऑब्जर्व, जब हम जितने ही हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं वहाँ पे जो हॉरिजन है, वो हॉरिजन जो होता है that gets widened and we can see the curved side of the earth. For an example that I'll share after this class, I'm going to share some pictures that shows that earth is curved in shape. One I'm going to share about the view from the plane, and the second will be the view from the air balloon. तो इन दोनों के व्यू से आपको पता लग जाएगा कि इट शोज़ कि हाँ अर्थ जो है वो कर्व्ड है शेप में. सो यहाँ पे यू कैन सी द हायर द एल्टीट्यूड द वाइडर द सर्कुलर हॉरिजन. द सर्कुलर हॉरिजन ए एंड बी
it's widened to C and D as you move from Y to X. So जब आप X में मूव कर रहे हो तो आपका हॉरिजन जो है वो वाइडेंड होता जा रहा है. ठीक है. So now it's proof that the earth is circular in shape. Now circumnavigation. So यहाँ पे मैगलिन्स थे जो कि पूरे विश्व का एक राउंड लेना चाह रहे थे. So he started from the Spain and what he observed कि जब वो पूरे वर्ल्ड का राउंड लेके, because during that time flight planes are not invented, they were not invented, so they just take a water route. So जब उन्होंने अपने शिप से स्टार्ट किया, he came back in the same place from where he started. So he again came back in Spain from where he started. So it's proof that earth is in round in shape. Now the next is a sun rises and sunset. So we know very well that sun rises from the east and it sets from the west. But what we observed is the rises and sets timing will be different in a different places. हमेशा हमें इसमें differences नज़र आया. If it rises, then the timing will be different in a different places, and if it sets, the timing will be different in a different places. Just take an example of America and India. अभी अगर इंडिया में दिन हो रहा है तो अमेरिका में रात हो रही है. So ये होने के पीछे रीज़न जो है that is the shape of the earth. अगर ये flatten होता then the India's time and the America time will be same. If it is 2 p.m. right now, then in America also it's 2 p.m. But the timing is different and the day and night also getting different just because of the earth's shape. It is sphere in shape. Now the last evidence is a heavenly body. As we know that earth is a one member of the solar system, and in solar system what we observe that there are 8 planets and all the planets are in spherical in shape. So earth is also one of the member of that planet. That's why earth is also sphere in shape. It's proven that earth is also sphere in shape. So here your today's class is over. Just go through with this video, okay, and what you have to do, you have to make diagrams and you have to make notes of this chapter. Now in next video I'm going to discuss about the factors which are very important for the life existence on the earth. Thank you so much.